Hello and a very good morning YouTube, and it's a very sunny afternoon here in Hyderabad, and आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है. आई एम हियर एट जार ट्यूनर्स जहांगीर भाई शॉप. एज यू ऑल नो कि मेरे अलावा जहांगीर भाई इज़ द ओनली पर्सन आई ट्रस्ट विद माई बाइक्स, एंड पूरा सर्विसिंग वही उन्होंने करते. तो आज के वीडियो की टॉपिक इज़ गोइंग टू बी कि व्हेन यू बाई ए यूज्ड बाइक उसमें क्या क्या चेक करना. उसका तो मैं एक वीडियो बनाया था, द लिंक इज़ ऑन द स्क्रीन एज वी स्पीक. बट आफ्टर बाइंग द मोटरसाइकिल आई सेट के थोड़े पैसे साइड में रख लेना सर्विसिंग और चुटमुट ऊपर नीचे के लिए. यू नो मोस्ट पीपल जस्ट बाय द बाइक एंड थिंक चलो ले लेंगे चला लेंगे मरी जब तक घसेंगे बोल के, मगर वैसा नहीं रहता. वी नीड certain things have to be checked and certain things have to be changed, adjusted or whatever. So आज because I'm getting my bike serviced, I already did the CBR 650 and the FZ but didn't get time to make the video. But CB 1000 का I'm going to make a video for you all कि अगर आप लोग कोई used super bike ले रहे हैं, in general any used bike क्या क्या चेक करना और क्या क्या जनरल सर्विस में ऑयल चेंज के अलावा क्या क्या इंक्लूडेड रहता. मोस्ट पीपल जस्ट चेंज द ऑयल एंड लीव इट. सो लेट्स गो. एंड यस, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. आई कांट स्ट्रेस दैट इनफ ऑन माय वीडियोस. जहांगीर भाई इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं और उन्होंने मिलकर बना रहे. इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट पर्सन वीडियो, एज इन मैं ज़्यादा दिखूंगा नहीं बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग. सो लेट्स गो इनसाइड. जहांगीर भाई अस्सलाम वालेकुम. ये जहांगीर भाई है हमारे डॉक्टर साहब, हेड ऑफ हॉस्पिटल. तो जहांगीर भाई और मैं मिलकर आप लोगों को बताने वाले हैं कि व्हाट ऑल हैज़ टू बी डन व्हेन यू आर पिकिंग अप अ यूज्ड बाइक. लेट्स गो इनसाइड. देयर इज माय बाइक. ये अफरोज भाई है. भाई अस्सलाम वालेकुम. So do say hi to him when you guys come down, and the link to Jatuner's Facebook page is in the description, so you guys can contact them if you guys need to get your bike serviced here or anything. तो शुरू करेंगे ना डॉक्टर साहब. पहली चीज़ क्या करेंगे डॉक्टर साहब? ऑयल चेंज. ठीक है. तो आज हमारी गाड़ी में लिस्ट ऑफ कामा है. फ्रंट फोक ऑयल सील्स विच जनरली हैव टू बी चेक. थोड़े गाड़ियों के अच्छे रहते, थोड़े के नहीं रहते. माइन वे कम्प्लीटली लीकिंग. सो एंड या बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग ऑन द बाइक इट हैज़ टू बी थरोली वॉश्ड, बिकॉज गाड़ी खोलते करते डर्ट वो है इंजन में गिरी करी तो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट योर बाइक वॉश्ड बिफोर स्टार्टिंग विद द सर्विसिंग. सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट फोक ऑयल सील्स फर्स्ट. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑर्डर वाइज बिकॉज जनरली लोग सिर्फ ऑयल चेंज कराते हैं. बट पॉइंट नंबर 1, fork oil seals. So the first thing we're gonna do is take off the mudguard and headlight assembly and थोड़े मोटे चीज़ां to remove the forks. Sometimes the forks have to be throwed. Throwed is a term for adjusting the forks, right? कभी थोड़ा forks गड़े वड़े मार के used गाड़ियों के bend रहते तो उसकी वजह से भी oil seals चले आते. So if you just change the oil seals on bent forks, they're going to start the problem again. So you better get them checked whenever you're getting the forks सर्विस्ड के फोक बेंड तो नहीं. अगर बेंड नहीं है तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी ऑयल सील, डस्ट सील, कपल ऑफ क्लिप्स एंड इफ नेसेसरी द फोक बेयरिंग्स एज वेल, जो मैं आपको बताऊंगा अभी. So on my bike I got the complete fork repair kit from V Motor. So these right here are my, I think this is the dust seal. So 2 dust seals, 2 oil seals, and these were the fork bearings I was talking about. This set of 4. इधर है थोड़ा सामान, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक है. दीज आर द सर्कलिप्स दैट होल्ड एवरीथिंग टुगेदर. तो फोक बेयरिंग्स जनरली नहीं जाते, बट बिकॉज मैं मंगा रहा था अपने को आदत है हर चीज़ एक साथ चेंज कर देने की. सो आई जस्ट ऑर्डर्ड एवरीथिंग एट वंस. सो यू कैन ऑर्डर वॉट एवर यू नीड एज पर योर रिक्वायरमेंट. पहले चेक कर लेना कि क्या क्या है. मैं तो पूरा कंप्लीट सामान ही मंगा लेता हूँ. देयर आर सम अदर एक्सेसरीज लाइक द टेल टाइडी, लीवर्स जो कि अब लगने वाले हैं, ब्रेक पैड्स एज वेल. आई एम गोइंग टू बी रिमूविंग माई फोक्स एंड अपग्रेडिंग देम विद दीज. क्या डॉक्टर साहब ये डाल देंगे क्या? ब्रेक कैलिपर्स ऑफ. अल्लाह दरी एनएस के वैसी दिखती है यार. सामने से बेइज्जती हो गई 2-3 बार. लोग पूछ दिया भी एनएस है क्या बड़े हुई बल्कि. एंड दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स. So you can get your bike serviced at any workshop you're comfortable with. It can be the showroom, but generally I don't prefer the showroom because इतनी flexibility नहीं रहती. अब जैसा जहांगीर भाई के साथ खुलूस मोहब्बत से ठहर के हम भी काम कर लेते कभी, जहांगीर भाई थोड़ा बहुत बता देते भी, तो वो सब शोरूम में ज़्यादा रहता नहीं. So I always like to be in front of the bike and see what all is being done, how it's being done. Of course you can do the basic stuff like oil change at home, but for the more advanced stuff it's always advisable to have someone experienced with you because कभी क्या होता पूरा काम सही हो कि एक बोल्ट की जगह आके आदमी लटक जाता. तो दैट इज़ समथिंग दैट्स नॉट सपोज टू हैपन. तो अभी अंदर कौन सेट चेक कर रहे हैं जहांगीर भाई?
सही है ना जहांगीर भाई? कौन सेट ज़बरदस्त है नहीं? चलिए, तो कौन सेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोक्स का भी खोल के देखते हैं। तो एज माई बाइक हैज़ अ सिंगल साइडेड स्विंग आर्म, थोड़ा पेनफुल रहता बिकॉज इसका पैडक थोड़ा डिफरेंट रहता है एंड इट्स नॉट एज स्टेबल। तो नीचे एक जैक चढ़ा दिए, वी आर जुगाड़ किंग्स बट दिस नो जुगाड़, हेडर्स के ऊपर जैक चढ़ा हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। So once we open up the forks, there are quite a lot of components inside. वो क्या क्या गया only your experienced doctor will be able to tell you. But अपनी गाड़ी के तो forks अच्छे हैं ना, पेंट वेंट तो नहीं है डॉक्टर साहब, थ्रोइंग की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, तो गड़े से गए कि व्हीलिंगों से गए कि so all the oil, the old oil has to be drained out and then we'll be changing the oil seal, dust seals, the circlips and the fork bearings in my case, and we'll be refilling new oil. So we'll be opening them up and cleaning them from inside with petrol and all. So it's just not खाली खोल के चेंज कर देने का शॉट नहीं रहता बिकॉज बार बार नहीं खोलते, एक बार खोले तो उसको कम्प्लीटली पूरा साफ़ सफाई पूरी कर देना उसके अंदर से with air and petrol. So this is the fork spring. Generally ये नहीं जाता, it's a very high wear and tear product, तो टेंशन मत लो, but in case you guys want extra performance you can change those to Olin's forks. I mean the springs which are quite expensive but they are worth it. ये निकाल रहे क्या है वो, डस्ट सील है डॉक्टर साहब? हाँ। Once again, do not try this at home. So these are the old fork bearings and dust seals and whatnot. और ये डॉक्टर साहब पूरा पेट्रोल से साफ़ कर रहे हैं. So if you have a friend who smokes or if you smoke, I suggest you do not do it near the shop because नहीं तो फिर And yes, as soon as you notice that your oil seals are failing and oil is leaking, especially in the case of upside down forks, पहली फुर्सत में बदल लेना, नहीं तो डॉक्टर साहब बिना ऑयल के चलाए तो फारा खाद को आ जाता नहीं, फिर पूरे इसके ऊपर मार्क्स वार्क्स आके फिर उसका अलग अजाब रहता है. And replacing the entire fork assembly is quite expensive. So as soon as the oil seals are busted, I advise do not ride the bike and get them changed soon. अपसाइड डाउन में तो पूरा था, डस्ट सील जाते पूरा ऑयल नीचे निकल जाता. सो एवरीथिंग ऑन द फोक्स हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, द ब्रेक्स. सो इन माई केस द रोटर्स वर रियली गुड, सो नो प्रॉब्लम्स देयर, बट या द ब्रेक पैड्स हैड टू बी चेंज्ड. अब थोड़े जने बोलते हैं सामने का करो पीछे का छोड़ो. आई सजेस्ट व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, सामने पीछे के दोनों मंगाओ और एक साथ चेंज कर दो. क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात है ना? एकदम सही बात. तो the front road brake pads have been changed and since my bike it's a 2012, तो 6 साल से काफ़ी ऑयल की विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ जाता. तो विस्कोसिटी इज़ बेसिकली मतलब ऑयल को जो काम करना है उन्हें वो काम करता नहीं. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रेन द एंटायर ऑयल अलॉन्ग व्हेन यू आर चेंजिंग द ब्रेक पैड्स. पूरा ब्रेक फ्लूइड भी नीचे से ड्रेन करके फिर सिस्टम पूरा ब्लीड करके एयर निकाल के फ्रेश ऑयल भरा देना. क्या जहांगीर भाई सही है ना? Along with the tires, now I didn't mention the tires because मैं गाड़ी लेते कि immediately tires change कर दिया था. Even though you have thread on the tires, but still if it's a Pilot Road 2 which is the most commonly used tire in India, वो टायर का thread रहता लेकिन thread रहते हुए भी grip नहीं रहती. तो you know when the tire gets more than 4 to 5 years old, it becomes kind of hard. So it's always better to change the tires. Now coming to point number 3, the engine oil. So every time I change the engine oil, I change the oil filter as well, and apart from just changing the engine oil, if it's like done more than 20,000 kilometers, it's always better to use an engine flush. And apart from the engine oil, we'll be checking the throttle bodies and the spark plugs as well. So this service is not just for people who are buying a used motorcycle, it's also if your vehicle is done more than 20,000 kilometers, then you might want to get all this checked. Clean the throttle bodies and check the spark plugs, which we'll be doing later in a bit. But for now, we're just going to be changing the engine oil and the oil filter. But always use OEM parts. I order most of the parts from either Vmoto or VBike Japan. So yep. And always fill up the oil according to your user manual specifications. I'm just putting in some indicators. I've put some levers.
It's gonna be nice. So the rear pads have been changed as well, and we're gonna be checking if the brake fluid has to be bled and changed. और हमारे हसीब भाई मॉडल भी आ गए, तो सीनियर डॉक्टर साहब थोड़ा रेस्ट ले रहे, तो अभी जूनियर डॉक्टर साहब कर रहे, समझिए काम। बाहर गए जूनियर डॉक्टर साहब, वहाँ पे है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। So once we are done with that, we're gonna be checking the chain sprocket. तो already change करने का ही है, but it's still not arrived. I think it's gonna, अरे हट रहे, still gonna take 10-15 more days to arrive. Gold chain sprocket, तो फिर वो सिर्फ cleaning and lubing. But yeah, if you keep the bike for a very long time, even though भाई जाइए भाई, so even though the chain does not come to its last setting, but over the years 6-7 years से गाड़ी खड़ी हुई रही, तो पानी लग के थोड़ा chain hard हो जाती है. So that's what's happened to my chain sprocket, so I'm changing that as well. And don't just change the chain, you should always change the chain and the front and rear sprockets together. क्या मामा, समझ में आया? सही है ना डॉक्टर साहब? सही है ना डॉक्टर साहब? तो वीडियो देखे बस। तो इसके बाद से टंकी खोल के we're gonna be putting some spray into the injectors and आगे बोलूँगा चलो. So now comes the part for the coolant drain and change. So number 4 I guess is coolant. भाई थोड़ा आगे ले लो, रोड पे मुद्दरी गाड़ी पूरा. So always remember, it's always better, coolant सस्ता रहता. मोटुल का कांग्या हो वहाँ है, देखो इनोजेल आगे नहीं नहीं नहीं, मैं जूम कर लेता हूँ सर, ये छोड़े तो फिर इंडिकेटर गिर जाता बोलिए. That is the coolant and the oil. So it's always better to drain all the coolant from the system and refill fresh coolant. That will keep your bike cool. और भाई सलाम बोलना था ज़रा सबको. तो जूनियर डॉक्टर साहब है हमारे, क्या मामू? तो अब इधर हवा मारते ये पाइप करंट में आता, भाई मारिए. रात में अपन भी ऐसी करंट में आते. So jokes apart, the function of doing that is if there's any gunk, like for example the coolant in my tank had जम गया था नीचे, क्योंकि गाड़ी एक ज़माने से रखी हुई थी और उसमें शायद बोरिंग का पानी मिक्स हुआ था. So all that gunk or any dirt is there in the system, it will be cleared from the hoses. So now moving on to the air filter cleaning. भाई K&N का कहाँ है? Like usually I prefer K&N or Simota. This is a K&N, so it only has to be cleaned and put back. But if it's older than 5 years, fibers ज़रा गए हुए दिख रहे तो आप चेंज कर लेना बेटर है. But this is pretty much fine. Just has to be cleaned. And airbox अगर ज़्यादा गंदा है अंदर से, तो if the airbox is also too dirty inside, मेरा तो ठीक ही है, मगर है तो उसको भी निकाल के पूरा पेट्रोल वेट्रोल से क्लीन कर देते हैं. And apart from that, we're gonna be checking the spark plugs next. If they are iridium plugs, you're good to go. Just clean them, reinstall them. But if they're not iridium plugs, I suggest you get iridium plugs for your bike. So we are almost done with the entire service and the air filter cleaned. And now we just drained and we are cleaning the clutch fluid, as this is a hydraulic clutch vehicle, and the front and rear brake fluids. As I said, the oils were pretty old, तो वो जम जाते उल्ला, जैसा इधर पीले पीले धब्बे बढ़ गए देखो. तो इसको क्लीन करके the entire oil is bled out and we start pouring fresh oil into this. ऑयल लाने के वास्ते भिजाए हमारे भाई को, तो ऑयल पोर करके पूरा .4 या .5 डाल के completely fresh brake and clutch fluid, which is needed because over time it loses its viscosity. So I think we're almost done with the service, and I fixed this tail tidy and indicators back here and some custom levers up front. अभी गाड़ी का wrap आना बाकी है, तो once the wrap is here I'll be making a complete video of the bike. My spark plugs also have to be changed because they're not the one specific to this bike, so that and the chain sprocket should be here in 10-15 days, so that will be changed at a later time. And abhi ke liye just getting the injector spray and getting the injectors and throttle bodies cleaned. कभी खोल के पूरा क्लीन करते, कभी स्प्रे मार के काफ़ी हो जाता, बट इट्स जस्ट माई बाइक्स जस्ट डन हार्डली 12,000 kilometers, so I think the spray should work fine. So that was the injector cleaning spray. So
So I guess that's about it for the servicing vlog. So I guess you guys got most of the points. So the only thing which remains now are spark plugs and chain sprocket. As you can see, my chain and sprocket is pretty hard and rusty. That's about it for the short informative vlog. डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत, गाड़ी पूरी खन हो गई अब. तो इफ़ इन केस यू गाइज वांट ड्रॉप बाय हियर, और एक्चुअली आप लोग जिधर भी कंफर्टेबल है गेट इट सर्विस, बट इन केस यू गाइज वांट ड्रॉप बाय हियर, द लिंक टू हिज पेज इज ऑन फेसबुक एंड द शॉप इज इन रामकोट. अ लॉट ऑफ यू नो इट, जार ट्यूनर्स. एंड गाड़ी रेडी हो गई. आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया. क्या जहांगीर भाई, एक दो बोल्टा टाइट कर लिया. शुक्रिया आपका, अच्छा काम कर रहे हैं आप. एक दो बोल्टा टाइट मैं भी कर लिया. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय. बाय.